Right. So the general characteristic of group 15, let us see. First one being nature. Nature wise, if you look, these two are non-metals. These two are non-metals. These are metalloids, and bismuth is a metal. Okay. Right. Yes, sir. Atomic size wise, if you look at it, it will keep increasing down the group. So you will have arsenic, then antimony, and then bismuth. Just like in group 14, tin और lead के बीच में ज़्यादा difference नहीं था, यहाँ पर भी it is around 141 picometers, while bismuth is around 148 picometers. So the difference is very less. So your difference is less. Clear, beta? Yes. Next. Volume and density, if you look at it, both of them will increase down the group. So there is quite a regular trend here. So there is no exception here. Next, ionization. Ionization, if you look at it, the first ionization, right, is much greater. The first ionization is much greater for group 15. यहाँ पर group 15 करता हूँ. 15 group as compared to that of 16th group as compared to that of 14 group. Correct. Typically, this is what you will observe in ionization energy. Within the group, if you look at it, nitrogen is more than phosphorus, then arsenic, antimony, and bismuth. Okay. Second one, if you look at it, nitrogen greater than phosphorus, arsenic, then bismuth, then antimony, and nitrogen greater than phosphorus, greater than arsenic, then again bismuth greater than antimony. Not much of an explanation here. You just need to know that bismuth will have slightly more characteristic because of lanthanoid contraction, right? So if you want to understand the reason, that is because of lanthanoid contraction. Done. Yes. And every time you talk about the ionization, we know that the first ionization will always be less than the second and the third, and so on, right? Yes, This sir. will happen. Next, electron affinity. If you look at it, one important aspect we need to know is that delta H, electron gain enthalpy, right? ये usually negative होना चाहिए, released energy होना चाहिए, but this is positive for few cases. We know that the cases which are positive is nitrogen, okay, beryllium, magnesium, and all inert gases. All inert gases. Got it? Yes. Which means if electron gain enthalpy is positive, electron affinity would be negative for them. है ना? Yeah. So these are the only elements beta which will have negative electron affinity. वो याद रखना आपको. Hmm? Okay. हाँ, Next. sir. Nitrogen, if you look at it, the value here, this is in electron affinity value. So you can see why it is -8 now. Okay. Yeah. Yeah. And it increases increases down the group. So it increases. So usually हमेशा decrease होना चाहिए ना. इसमें हमेशा हाँ, sir. completely increase हो रहा है. Right. सर So ऐसा क्यों ट्रेंड देखते हैं? रिवर्स ऑफ because half fill stability. Here half fill stability is an important aspect. No? अच्छा, ओके. Right. That's why it is happening. सर मतलब बिल्कुल भी उसको इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना ना. Hmm? Sir, like it does not want to gain an electron at all. Which one? Sir, like all of these don't want to gain electron, no? Yeah, yeah. Hmm. Okay. Nice. Next, see electronegativity. Electronegativity will decrease down the group here. Decreases down the group. So which is a common thing, right? So यहाँ पर 3.0 is a regular trend. So 2.1, 2.0, 1.9 and 1.9. So this is how it will be. ठीक है? So electron affinity is the only one beta which is increasing, unlike other groups. सारे ग्रुप्स में यूजुअली डिक्रीज होता है, एक दो में चेंज होता है, बट इसमें पूरा ही पूरा इंक्रीज है. Yes. Next, melting point. Melting point, the difference here is, arsenic will have slightly more melting point than the others. Okay, bismuth, antimony में.
अगेन मेल्टिंग पॉइंट को हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग इन मेटालिक बॉन्ड से देखना है. सो आई कैन से दैट हियर ns2 electrons, okay, do not participate in metallic bonding. That is the reason. Okay. Done. Next, Yeah. boiling point. If you see the boiling point, arsenic के बाद bismuth, फिर उसके बाद antimony. Correct. So although molar mass wise, atomic weight wise, bismuth is better, but the size wise, tin antimony is better. Correct. So smaller size, so better boiling point. Clear. So that will dominate. बॉन्ड एनर्जी वाइज नाइट्रोजन में रिपल्शन बहुत रहेगा बिकॉज ऑफ द लोन पेयर प्रेजेंट विथ इट. फॉस्फोरस में लोन पेयर रिपल्शन वीक होते हैं, सो बॉन्ड स्ट्रेंथ बेटर होता है. सो इसके लिए पीपी सिंगल बॉन्ड इज बेटर देन एनएन सिंगल बॉन्ड, देन आर्सेनिक, देन एंटीमनी. क्लियर? सर पीपी ज्यादा क्यों रहता है एज I'll कंपेयर put टू? it here. Due to smaller size of nitrogen, okay, electron repulsions between lone pairs is more. Understood? Yes. That's why the strength, bond strength is weaker. Done. Yeah. Next, nature of bonding. If you see that nitrogen can form p pi है ना, just like carbon, nitrogen, oxygen, ये सब बना सकते हैं. Okay. हाँ. Just a minute. Nitika, 1 minute. Yes. Yeah. Now look at it. Nitrogen can form this p pi bonds, just like carbon, nitrogen, I mean carbon, oxygen, boron, ये सारे. बट फॉस्फोरस डबल बॉन्ड नहीं बना सकता है, अगेन क्योंकि पीपी का ओवरलैपिंग करना है ना. सो Yes. बट इट कैन फॉर्म पी डबल बॉन्ड ओ एंड पी डबल बॉन्ड सी, बिकॉज इसमें क्या है, वेकेंट डी ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग हो सकता है 2p और 3d में. Okay. सो पीपी के बीच में नहीं हो सकता है, बट पी और ओ, पी और सी, पी और बी, इन सब के बीच में अच्छे से हो सकता है. हाँ सर. That's why you will see phosphorus arsenic can form d pi bonds with transition metals. Like आप देखोगे कोई भी मेटल है, ये ट्रांसिशन मेटल है, तो उसके साथ में ये डी पाई बॉन्ड बना सकते हैं. दिस बॉन्ड्स आर मोर लाइक दिस, कि यहाँ पर मेटल है, उसका कोई डी ऑर्बिटल है इस तरीके से, और फॉस्फोरस का डी ऑर्बिटल है इस तरीके से. करेक्ट. ये दोनों के बीच में पाई बॉन्ड आ रहा है. समझो? सो डी पाई कैन बी फॉर्म बिटवीन देम. ठीक है बेटा? ओके. हाँ सर. Nitrogen can form d pi p pi due to the absence of d orbitals. I mean, sorry, कैन फॉर्म या कांट? cannot form d pi p pi because उसके पास d orbital नहीं है ना हाँ नाइट्रोजन के सर. पास.
So it cannot form that d pi p pi overlapping. Again, catenation power of these elements is less than 14. अनलाइक कार्बन ना बेटा, नाइट्रोजन इतना कैटिनेटिंग पावर शो नहीं करता है. ओके, रीजन बीइंग क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इतना स्टेबल नहीं है जितना कि नाइट्रोजन में. सो नाइट्रोजन मेक्स अ वेरी स्टेबल ट्रिपल बॉन्ड. सो most of the nitrogen, instead of extending as a single bond, it will prefer to become a triple bond. समझ में आया? Yes. That's why. And anyways, catenation power in any group will always decrease down the group. Okay. Yeah. Nitrogen has a high, very less tendency to form single bonds with NN bonds because of its repulsions. So it will always go for the multiple bonds. Okay. Yes. So double bond, triple bond ज़्यादा form करता है. Okay, beta. And what is Yes. the existence? If you see nitrogen as an existence, it will be diatomic. Correct? It will be diatomic because of the triple bond formation. But phosphorus, arsenic, antimony, ये सारे के सारे P4, S4, SB4 ऐसे होते हैं. So this is tetra atomic. समझ में आया? This is Yes. a tetraatomic. Next, common oxidation states. If you check out the common oxidation state, that is -3, +3 and +5. ये सबसे ज्यादा शो करते हैं. Out of which nitrogen shows the most. So you can see nitrogen यहाँ पर -3, -2, -1, -1/3, 1, +1, +2, +3, +4. Okay, N2O5 नहीं लिखा मैंने, N2O5 +5. So it can show right from -3 to +5, all those ranges, correct? Yeah, sir. Phosphorus, if you look at it, it will have -3, -2, +1, +3, +4, +5. And ये important है, it is the only compound which shows +4 oxidation state, otherwise it won't. Okay, Yeah, sir. done. Right. Yes. Questions have been asked like, when is nitrogen being -half 1/3 as an oxidation number? You can see hydrozoic acid का structure ऐसा होता है. Hydrogen is connected with nitrogen as a double bond, again double bond N, with this getting minus, this getting plus. इस तरह से exist करता है. This is the structure of hydrozoic acid. Okay. Yes. And see, stability of -3 oxidation state decreases down the group. And why is that happening? Because metallic character is increasing. And due to increase in size and in metallic nature. Okay. Okay. Yes. Next, stability of +5 oxidation state and +3 oxidation state increases down the group. Okay. Usually, if you compare to that of +5 का oxidation state decrease होगा, +3 का oxidation state increase होगा, and this can be accounted for inert pair effect. So you can see bismuth shows more less +5 and more +3. That's why if you have +5 acts as shows +3 and +5, but bismuth +5 acts as oxidizing agent. So it will exhibit like oxidizing agent. Okay. Yes. And the oxidation state, if you look at for nitrogen, oxidation state for nitrogen between +1 to +4. If you check out between +1 to +4, ना, it will undergo disproportionation. मतलब कोई भी नाइट्रोजन बेटा कंपाउंड जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और +4 के बीच में है, तो वो हमेशा डिस्प्रोपोर्शनेट होता है. दिस इज एन observed fact. ठीक है. All the compounds will undergo disproportionation. See, oxidation state of nitrogen here is +3. No, this is nitrous acid, and nitrous acid is unstable. It will immediately disproportionate itself to HNO3, which is +5 oxidation state, and NO, which is +2 oxidation state. समझ में आया? हाँ हाँ. Okay. हाँ सर. Yeah. Right?
Got आप बोल सकते हो सर ये +2 तो है, ये तो ये भी इसके रेंज में, हाँ ये फिर से डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, ठीक है, okay. बट ये पहला डिस्प्रोपोर्शनेशन। Yes. क्लियर? Yeah. Whereas this is a very very important line, whereas all intermediate of phosphorus disproportionation takes place both in alkaline and acidic medium to give the products. कोई भी intermediate हो, मतलब 0, +1, +2, +3, +4, -2, -1, all of this will undergo disproportionation in phosphorus compounds. Okay, and everything will convert into +5 and -3. सर कोई रेंज नहीं है इसके लिए, ऑल ऑफ देम, नो रेंज, सारे के सारे डिस्प्रोपोर्शनेट होते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये भी है कि किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, इसमें सारे के सारे एंड प्रोडक्ट, फॉस्फोरस के सारे एंड प्रोडक्ट्स विद +3 और -3 एंड +5 यही होते हैं। और -3 +3 +5 ना? ना -3 +5 ओनली, +3 तो बीच में ना। ओके हाँ सर। देखो एग्जाम्पल बता दो, सपोज इफ आई टेक H O3 2-, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, करेक्ट। अब ये पहली बात H+ लेकर पहले आपको ये बना रहा है H3PO3, बराबर। अब Yes. ये एसिडिक मीडियम में आप रखोगे, एसिडिक में रखो या बेसिक में रखो, इन बोथ द केसेस इट विल अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन, ये बन जाएगा H3PO4 प्लस PH3 प्लस H2O। समझ में आया? तो आप देखो दोनों में क्या चेंज हो गया, इट हैज चेंज टू +5 टू -3। डन? Yes. +3 of bismuth, arsenic, antimony, these are stable, with respect to disproportionation, correct? So ये when it comes to bismuth, ये सारे +-3 तो होंगे नहीं, यूजुअली +3 एंड 0 पे रुक जाएंगे सारे, ओके। Yes, sir. डिस्प्रोपोर्शनेशन टू -3 एंड 0, ठीक है। Yes, sir. See the hydrides. The nitrogen hydrides which we commonly see are NH3, N2H4 and M3H. Clear? ये दोनों Yes. basic है. These two are basic, and this is acidic. Okay. Phosphorus has pH3, P2H4. Correct? pH3 and P2H4. इसमें Yeah, से, sir. हाँ, इसमें से दोनों ही न्यूट्रल शो करते हैं इन जनरल सेंस, ठीक है, ये न्यूट्रल शो करते हैं। इसमें थोड़ा सा P2H4 में थोड़ा रिएक्टिविटी आता है एसिडिक का, वो मैं अलग से लिखा हूं, वो मैं बताऊंगा। ओके, Okay. हियर सो फार, राइट। डेल्टा H फॉर्मेशन देखो बेटा, डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ ऑल हाइड्राइड्स इज नेगेटिव। डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ ऑल हाइड्राइड्स, is negative. All hydrides is negative. Okay. Yeah, sir. Got it. Next, sixth, bond dissociation energy. If you look at it, ammonia is better than pH3, arsenic, antimony and bismuth. ये bond dissociation energy है. Okay, obviously यहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन में बॉन्ड स्ट्रांग होता है as compared to that of phosphorus hydrogen and one thing you must remember बेटा, ये ना sp3 hybridized है, but all of these are unhybridized. All of these are unhybridized. ठीक है। Yes, sir. Group 15, 16, both hydrides are except the first element, मतलब नाइट्रोजन इस केस में, उस केस में ऑक्सीजन, ये दोनों को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स अनहाइब्रिडाइज्ड होते हैं। दिस इज कॉल्ड ड्रैगोज रूल। रूल क्या है वो तो निकाल दिमाग से, इतना याद अच्छा। रखो कि फॉस्फोरस से आर्सेनिक, फॉस्फोरस से बिस्मथ यहाँ पर, और सल्फर से पोलोनियम वहां पर, ग्रुप 16 में सारे के सारे अनहाइब्रिडाइज्ड है। ओके, Sir, can they ask the word that Drago's ना rule ना or देखो, okay.
that is not there even in PhD level. Okay? They Acha. usually don't use much about that. Okay? Okay. Next, reducing nature. See, reducing nature is the ability to give hydrogen easily, and you know that bismuth और hydrogen का bond weak है, तो ये बहुत easily दे सकता है. So हाँ which sir. makes the thermal stability exactly opposite. And boiling point, if you look at it, boiling point, bismuth will have more because of its more weight. And after that, it is antimony, correct? But उसके बाद आ जाता है ammonia because of the hydrogen bonding. ठीक है? फिर Yeah. arsenic, फिर आ जाता है phosphorus, PH3. PH3 is almost gas. बाकी सारे गैस नहीं है, बस ये गैस है. Okay? Okay sir. Bond angle, if you look at it, bond angle, ये bond angle तो hybridization पे ही है. 10 degrees 5 minutes. क्यों? It is sp3. बाकी सारे unhybridized. That's why their bond angle is less. और ये होता है almost 90.5, correct? Sorry, 91. Right. That's why I was a little hesitant to use this. 1 minute. Yeah, let me rewrite. This is around 107 degrees 5 minutes. Okay, while this is around 91 degrees. This is around 90.5 degrees. This is around 90.3 degrees. इस तरीके से मतलब ऑलमोस्ट अब 90 डिग्रीज है ना बेटा, समझ रहे हाँ हो? sir. Which tells us कि ये sp3 hybridized है and बाकी सारे के सारे unhybridized, right? That's why their हाँ. bond angle is, क्योंकि unhybridized है तो p और दो p के बीच में bond angle कितना होता है? 90 तो होता है. That's why they are almost 90. Okay. Yes sir. Next. अरे सॉरी, मैंने बॉन्ड एंगल की जगह पे ये लिख दिया है. मैं बेसिक कैरेक्टर ऊपर लिख देता हूँ. ये बॉन्ड एंगल कैरेक्टर और ये बेसिक कैरेक्टर. ओके. अच्छा, अभी बेसिक कैरेक्टर देखोगे तो NH3 विल बी मोर बेसिक देन PH3, देन ASH3, देन SBH3 एंड देन BiH3. वाई? यहाँ पे भी देखो, बेसिक कैरेक्टर डिपेंड करता है लोन पेयर पे, राइट? हियर लोन पेयर इज इन sp3 हाइब्रिडाइज, सो इजिली अवेलेबल. बाकी इन सब में p ऑर्बिटल में है तो अवेलेबल नहीं रहेगा, है हाँ ना? sir. That's why. So PH3SH3 do not form salts with aqueous acids because you know they are not much basic in nature. ठीक है? इनफैक्ट अगर आप बेसिक नेचर चेक करोगे तो NH3 is more basic than water is more basic than PH3. So PH3 is almost neutral. वाटर से भी कम बेसिक है. समझा बेटा? Okay. So हाँ if sir. you add PH3 in aqueous HCl, right? Okay, then it would simply exist as PH3 only. In fact, water will take that H plus and becomes H3O plus and Cl minus. अब समझा? हाँ That's sir. why I told you that it is relatively neutral. Yeah. हाँ, if you put anhydrous, but if you put PH3 in HCl, right, with Yeah. aqueous condition, then there is no change in it. But if you put it in anhydrous form, this is let's say anhydrous form, okay, then in anhydrous it will pull away that H plus, okay, and becomes I minus. तो anhydrous में थोड़ा सा बेस की तरह बिहेव कर रहा है. Okay. हाँ sir. Next, let us see type of, what are the type of oxides in this group. Okay, so the type of oxides are two beta. One is E2O3. E2O3 ज्यादा फॉर्म करते हैं ये ग्रुप वाले, so that includes N2O3, P2O3, but P2O3 dimerase हो जाता है, that's why I write it as P4O6. ठीक है? Yes sir. The same is the case with arsenic. If you look at it, AS4O6, which is the same case as antimony O6, which is the same case
अगर बिस्मत नहीं होता है सो Bi2O3। हाँ, इसमें से एसिडिक कौन सा है, क्या क्या है चेक करते हैं। दीज टू आर एसिडिक, दीज टू ऑक्साइड्स आर एसिडिक, ठीक है। एंड दीज टू आर एम्फोटेरिक, these two are amphoteric here, and Bi2O3, this is basic. Done. Yes. Next, if you look at E2O5, E2O5, that is N2O5 and P2O5, अच्छा P2O5 भी dimerize होके मिलता है as P4O10, which is better than, okay, AS4O10 and antimony O10 and SB, sorry SB लिख दिया मैंने, and we have bismuth Bi2O5, correct? हाँ, Yes, sir. इसमें आप चेक करोगे, now all of them are acidic, this is acidic, this is amphoteric, amphoteric in nature. Done? These are the cases. Yes, sir. Got it. Halides, देखो बेटा, it will exist, nitrogen exist all forms of all of them being halides. NF3 is the only stable halide. बाकी सारे ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बिकॉज नाइट्रोजन इज स्मॉलर ना बेटा, उनके साथ ये बॉन्ड रहेगा तो आपस में बहुत रिपल्शंस रहेंगे, देयरफॉर दे आर हाईली एक्सप्लोसिव इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। थोड़ा भी प्रेशर बढ़ोगे तो एटमॉस्फेयर दे विल रिपेल ईच अदर एंड क्लोरीन की तरह, गैस की तरह निकल जाएंगे बाय रिलीजिंग ह्यूज एनर्जी, ओके, Yes. करेक्ट। सो इट इज एक्सप्लोसिव बाय on slightly heating, or even if you like rub it और उसको थोड़ा एक्सपोजर कर दिया एटमॉस्फेयर में, so they'll immediately become N2 and X2 and releases huge amount of energy. हाई, समझा भी? नेक्स्ट, phosphorus. Right. Okay. Next, phosphorus, all of them will form, all of them are stable. Arsenic, all of them are stable. Antimony, all of them are stable, ठीक है। Bismuth, BiF5, correct, ये BiF3, this exists in the ionic form because bismuth is most metallic na beta, so because it is metallic, so it will exhibit more ionic form, and here these three are covalent only, okay. So BiF3 is the only ionic form which you will get, rest all are covalent. Yes. And these elements also exist as X5, okay. Nitrogen cannot exhibit X5 because there is no d orbital, right, no d orbital, so 5 वाला exist नहीं कर सकता. Phosphorus exists, but Pi5 does not exist, unstable, ठीक है, so it is unstable, so it cannot be formed. Clear? Okay. Arsenic, if you look at it, it will form fluorine, chlorine, but chlorine is also less stable in it. Antimony, both will form. Bismuth, only fluorine will form, okay. And I told you that Pi5, it is unstable because it will immediately become Pi3 and I2. Clear? Yeah, sir. Basic character. Now, if you look at the basic character here, we can say it will increase as you go towards iodine. Why? देखो, फ्लोरीन यहाँ से खींच रहा है ना बेटा, तो क्या माइनस इफेक्ट इसका ज्यादा रहेगा, so ability to donate electrons will be less, correct. So it is dependent on minus I effect of halides. Done? Clear? Okay. Next, if we compare any NF3, PF3, ASF3 like that, कोई भी एक particular halide के लिए compare करोगे तो NF3 is more basic. So this is how the basic nature would be, because electron density nitrogen पे ज्यादा होगा, so it can give electrons better than other group, okay. Yes, sir. NBr3, Ni3 exist as ammoniates only. Ammoniates मतलब they will exist as NBr3.NH3. जहां पे भी ये बन रहे हैं ना, इस तरह से exist करते हैं, Ni3.NH3. Just like water of crystallization बनते हैं ना बेटा, we write it as Yes. dot 2H2O.
like that they exist in ammonia as dot NH. Okay, clear? Next, NF3 on hydrolysis, if you look at it with water H2O के साथ, ये बिल्कुल react नहीं करता है, right, at normal conditions. Yes. Reason being, ना फ्लोरीन के पास d ऑर्बिटल है, ना नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल है, so no d orbital exist for both nitrogen and fluorine. बराबर? Yes, sir. Next, see the second case, NCl3. NCl3 में भी आप देखोगे तो यहाँ पे नो d ऑर्बिटल, बट इसके पास तो d ऑर्बिटल, yes, yes, correct. That's why water would attack more on chlorine rather than on nitrogen. Okay. Yes, sir. तो that's why पहले ये क्लोरीन को अटैक करेगा तो OH उसके साथ चला जाएगा, वो जब निकल जाएगा तब नाइट्रोजन का लोन पेयर H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा. That's how you will get NH3 and HOCl. Done? Yes, sir. Very important reaction asked many times. Clear, beta? Sir. So I'll show you the mechanism also just for the sake. Chlorine, 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 empty d orbital, water attacking from here. So bond will break from this side. Huh? Next. PF5 हाइड्रोलाइज हो जाएगा because phosphorus has empty d orbital. इसके पास empty d orbital है तो वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा, but at a slower pace. But PCl3 happens very fast, so it will give H3PO3 plus HCl, correct? Yes, And sir. H3PO3 tautomerize हो जाता है, tautomerize होके ये बन जाएगा P double bond O, H, OH and OH. That's why if you were asked what is the basicity, you will see basicity is 2. Basicity is 2, which means ability to give H plus is 2. Done? Sir. This is tautomerization. Right. Next, basic nature. If you look at the basic nature of these four, if you compare I3, Br3, it all depends upon what bit of inductive effect. Inductive effect. So fluorine is strongly pulling, so phosphorus cannot give lone pair easily. Yeah? Okay. Yes, sir. Right, beta. Okay. So we'll stop it here. No, sorry. Yeah. एक ही पार्ट है रिएक्शन विद मेटल्स में, ये खत्म करता हूँ. नाइट्रोजन कंपाउंड्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में. Okay. These elements react with electropositive elements to form compounds with -3 oxidation state. For example, मेटल्स के साथ आप चेक करोगे जो Mg3N2, दिस इज वन. कैल्शियम के साथ कैल्शियम फॉस्फेट भी बनता है, सोडियम आर्सेनेट बनता है AS, एंड जिंक जिंक व्हाट डू से एंटीमोनी बनता है, मैग्नीशियम बिस्मथ भी बनता है ट्वाइस, Bi twice. Okay. Yes. Yeah. So the other compound which will form magnesium और lithium, आपको पता है diagonal relationship maintain करते हैं, so that's how they will form. Yeah. Yes, sir. So these are the reaction with metals. That's it. The second part is all about preparation of nitrogen N2 gas, उसके reactions. Okay. Okay, sir. And compounds of nitrogen. Compounds of nitrogen में सिर्फ ammonia, okay, and nitric acid. बस ये दोनों हैं हम लोग को ये ग्रुप में. Okay, sir. हाँ. It is the biggest chapter compared to all P block. तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी सारे छोटे हैं. अच्छा. Okay. I will spend one more session on this and we'll be able to finish that. ठीक है? Sir. हाँ बेटा, I forgot to ask, have you enrolled in any